Anija, could you share your screen? So, in today's session, we will uh, take through a demonstration of our project, live demonstration of our project. So, we'll use a tool to demonstrate how we are going to post edit the any input PDF document that will pre-process using our pipeline by converting it to an OCR and then translating it into a target language, and then we are going to do post edit using our tool. So Anuja, you could share your screen and we can start. जैसे गणेश सर ने कल बताया था कि हमें सबसे पहले गिटहब में साइन अप करना होता है। सो आपको सबसे पहले गिटहब में साइन अप करना है और उसके बाद प्रोफेसर गणेश को और गणेश सर को आपको ईमेल करना है। देन So, हम Anuja, sorry to interrupt. Maybe I can uh, tell the complete process. So, what you need to do is you need to, if you'd like to translate a PDF document or any Word document, we would like you to send an email to Ganesh sir, uh, which will which will use your email ID and send you an invitation of the GitHub repository. So as Anuja is showing, you need to upload a PDF document or a Word document in this GitHub repository, and then we'll give you uh, the the output which will be fed to the tool. So once you send an email to Ganesh sir, you will receive an invite, an automatic invite to this GitHub repository. तो जैसे ही स्पंदन सर ने आज हमारे साथ ये पीडीएफ साझा किया था, तो इस पीडीएफ का जैसे बुक सेट बना है, हम यहीं पे अपलोड करके उनके साथ शेयर कर देंगे। एक बार आपका यहाँ पे आपको सेट मिल गया, उसके बाद इस सेट को क्लोन करने के लिए आपको यहाँ पे कोड में जाके वो लिंक कॉपी करनी है। आपके जो भी बुक सेट है उसकी लिंक आपको यहाँ से कॉपी करनी है। आपको यहाँ आप जब भी आप गिट इंस्टॉल कर लोगे, तो यहाँ पे गिट बैश हियर में जाके आपको एक कमांड डालनी है, गिट क्लोन, और जो लिंक आपने कॉपी की थी रिपोजिटरी की आपकी, वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। और यहाँ पेस्ट करने के बाद आपको एंटर पे क्लिक करना है, तो आपका रिपोजिटरी यहाँ पे क्लोन होना स्टार्ट होगा। सॉरी, तो ये एक रिपोजिटरी है जो पहले से बना है, तो मैं इसे क्लोन करके दिखाती हूँ अभी। गिट क्लोन, और फिर वो जो लिंक मैंने अभी कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट और एंटर क्लिक करने के बाद ये रिपोजिटरी आपके डेस्कटॉप पे कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेट क्लोन होने के लिए ही हमें इंटरनेट की आवश्यकता है, उसके बाद इंटरनेट की हमें आवश्यकता नहीं है। ओके, so for cloning the set you have internet access. After that, for the post editing or using tool, you don't want internet. Without internet, offline mode also our tool is working. So this set is cloned. Now I'm opening the set. So this is our tool. We have to open qpadfinal.exe file. After opening the file, here you have to select your role as a verifier or corrector.
So yesterday, as sir told, corrector is for the first time who are post editing, and after corrector completed the book, then verifier can check and do proper checking in verifier mode. So I clicked on corrector. Then for opening a set, click. You have to click on file, then open project. Then I'm opening the set. Sorry. So my set is opened successfully. Project is opened successfully. So here we can see the 5 part. First is this. Here we have multiple toolbar, and in the middle section we can edit the text here or do post edit. This is the image part, image of the book, and this part is the technical dictionary. If you want to edit any book, so this is the this aerospace chemical propulsion book have 484 pages. I'm just opening random. So, so after clicking the first part, you can see the B box, the box here, where Anuja, you could zoom the right screen. yes, I'm zooming in. तो हम जिस टेक्स्ट के ऊपर या जिस सेंटेंस के ऊपर काम कर रहे हैं वो यहाँ पे पेज के साइड में हाईलाइट हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं. So, Anuja, I could intervene at this point. So, during translation, many of the feedbacks that we got was that we need a context over which the target site translation has been made. So, here what we have put one feature in which if you hover over the left side, so if you hover over some line over the Hindi sentence, then the corresponding English sentence would be highlighted in the right side in that image form, which is present in a PDF or image format. So this is what this feature is about, which will help user or translator to quickly find out the context, quickly find out the line where that translation for that corresponding Hindi line is there. Yes, thank you, Ayush. And as one of the other feature that was mentioned yesterday was the inclusion of CSTT dictionaries. So CSTT are technical dictionaries, technical vocabulary glossaries that is provided by Government of India. So the green boxes here you see in the left side, the Hindi side, यहाँ यह या प्रवाह सुविधाओं इस अतिरिक्त बल की उपलब्धता. So अतिरिक्त and प्रवाह is highlighted in green. So that reflects that this pravaha is mentioned in the CSTT dictionary. So it's a technical term which is part of a CSTT dictionary, which is being shown in the bottom left. So in the bottom left, we are showing all the words that are present in this page as in the form of as well as in the dictionary form. So those words which are present in dictionary as well as in this page are present in the bottom left box, which in the screen, if you can see this highlighted text. So for example, accelerate is translated as Twarit Rupta. I am not able to see it completely in physics. So PH is physics, so in account is like
Anuja, could you spell? I can't see the. PH is physics, CH is chemistry, IT information technology, GE general dictionary, MA is mathematical dictionary, like that. So in order to enable translator to refer to dictionary quickly, we have make the words highlighted here in green boxes. So for example, gas is there, which is there in chemistry is transliterated as gas also, with corresponding to the CSTT dictionary as well. So color coding is not with respect to domain. So at this point, we have shown whichever word is present in the dictionary, we have highlighted that this is not as per the domain. So the user, so right now the next feature that we are including is user can right click on this green box, and the different domains of the translation, possible translations will be shown to the user on right click as well, instead of going through this bottom left box, bottom left section. उसके बाद go ahead, Anuja. उसके बाद हमें कोई अगर सजेशंस देखने हैं तो हम यहाँ पे लोड डेटा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद लोड राइट क्लिक करके सजेशंस भी देख सकते हैं. So whenever the user has made an edit to any word in the document, so for example, if you change Pravaha to some other word, then in the next pages that Pravaha will be shown as a suggestion to the user. So for example, Anuja, we could demonstrate by changing Pravaha to some other word. So she has changed Pravaha. You could delete Pravaha there. So Pravaha is changed to Gati now. Anuja, you could delete this Pravaha word. Right, as Sneha pointed out in the chat, the synonyms are showed in the Word document. Yes, it is correct. Yeah. So since she changed Pravaha to Gati, so if you see this alert box, it gives you a prompt. Do you want to replace with the Pravaha with Gati in rest of the pages? So in subsequent pages, it asks for a replacement. So do you want to replace them over the rest of the pages or not? And those which are replaced will be shown in a yellow color in the rest of the pages. So you could press a replace Anuja, and then we could move to the next page and show that the Pravaha is changed to Gati everywhere. And as mentioned yesterday also, Sneha asked that, Sneha ji or some other person asked, does it preserve the context over which the change has been made? So currently it doesn't. So currently it asks for just a global replacement without considering any context. But we are working on that front in order to make the replacement more context aware. Anuja, where Pravaha is changed to Gati, will be shown in yellow. Could navigate to some other page.
Yeah, for example, here there is some other replacement that the user has done where he has changed some. Uh, yeah, go ahead. So here the yellow boxes are shown as a replacement. So one feedback came yesterday. Yes, can we show the replaced word as well as the word that is replaced with this yellow box as well, so that this is more the user. If it's a long document, that the user uh, can be aware, can know which is the replacement that has been made. So yeah, we'll include that, incorporate that as a in our next version, which will be released maybe next by Monday or Tuesday. So we'll include that as well. तो इसके अलावा अगर हमारे बुक में कोई इमेज इक्वेशंस हो तो फिगर हो तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अभी इस बुक में इक्वेशंस है, तो आप यहाँ पे मार्क रीजन के ऊपर क्लिक करके आपको जो एरिया है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिगर है, टेबल है या इक्वेशन है, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, वो इक्वेशन यहाँ पे आ गई। इसी तरह से आप इमेज और टेबल भी ऐड कर सकते हैं। So right now we are embedding these images, tables, charts, graphs in the form of a PNG image here. But we are we are researching on this front such that we can extract the actual raw text from the table itself and put that in the form of the table in the target document. So we are currently working on that, but right now we are only embedding the image, equation, or any other graphs in the form of a PNG in the target document. So once when we export this into a PDF document, and we are working on the converting that to a Microsoft Word document itself, so it will be embedded as it is being shown in this current tool target sign itself, target document itself. And we have several features such as we can resize this image, we can align this image left, right, and center, and so on. So we could resize the image. I could show. Yeah, so currently the dimensions of the image is 300. different. 300. So we are changing that to 500 width. It will be 500 by 200. So yeah, I mean you can change the images that are present in the target document by simple editing, as we see in other word editors or any other editors that we use. इसी तरह आपको अगर कोई टेक्स्ट या इमेज को अलाइन करना है तो आप यहाँ से लेफ्ट, राइट, सेंटर अलाइन कर सकते हैं। Yeah. I think Winston ji mentioned that we can search for Gati. Actually, the search button that is present only searches in the current page. It doesn't perform a global search across all the pages. So that's a feature which is relevant only to the search only in the single page. So this search button, besides undo and redo, Anuja, that button only searches in the current page, not in all the pages. So that's why we cannot search for Gati. And maybe you could try replacing some other word, Anuja, in the previous page, observe some third and replace and change that here so that we can see it live itself. Change or to ya, something like that, so that or is more frequent. So I will change this Ganit part to some other word. To Devanagari. And on clicking save, it will ask for a global replace. Do you want to replace in the rest of the pages? After replace, when I close and open this file again, this
word will be highlighted, and if any other page will contain the same word, the word will be highlighted which has been replaced. Yeah, thank you, Kansha. Yeah. Yeah, thanks, Avi and Akansha. So we are continuously working on incorporating more and more features from the feedback that we receive from translators as well as correctors and proofreader. And we are researching over the fronts such as how can we incorporate more context-aware replacement, how can we make the effort that is required for the translator or the corrector and make the effort more lesser and help machine can help and assist the translator themselves. Yeah. So Anuja, you could show the formatting maybe at this stage. Uh, how can we format the data? Like we could, do font formatting as well as use different fonts. Yeah. Yeah, so we have a whole lot of fonts which are non-copyrighted fonts as an option available in this tool. So we could use any of these fonts. Currently, for Hindi text, we are using Shobhita font, which is an in-house font developed at IITB, open source in-house font, and that is more research based on how can we make it more appealing and clearly legible the Devanagari text. इसके अलावा अगर कोई हमें टेबल वगैरह ऐड करना है तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और टेबल में कंटेंट कोई लिखना है तो आपको यहाँ पे कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, वो सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद आप टेबल में जो भी आपका डेटा है वो लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास स्पेशल सिंबल्स भी है। हमारे पास स्पेशल सिंबल्स है, मैथमेटिकल सिंबल्स है, ये सारे सिंबल्स आप यहाँ से कॉपी करके आप अगर कोई भी मैथ्स वाला बुक की पोस्ट एडिट कर रहे हैं तो आप ऐसे सबमिशंस वाले ऐड कर सकते हो सिंबल्स। इसके अलावा आपके जैसे इस पीडीएफ में 484 पेजेस है तो मेरे 88 पेजेस के ऊपर काम हो गया है, तो पीडीएफ कैसे भी दिख रहा है, पीडीएफ बन के ये बुक कैसे दिखेगा, तो वो मैं डाउनलोड एज अ पीडीएफ करके भी देख सकती हूँ। सो जब भी आप डाउनलोड एज अ पीडीएफ करोगे तो ये बुक आपने जो सेट क्लोन किया है उसी सेट के अंदर बुक सेट नाम से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये सेट था, इसी के अंदर बुक सेट नाम से डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ। तो ये सब बड़ा वाला पीडीएफ 484 पेजेस का है, इसलिए ये डाउनलोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। We are also working on this front such that the main screen, the tool screen doesn't freeze us when you fire these like global replacement or download as PDF. So we are working on that front also, such that the user work is not stuck or freezes anytime. So all of these changes will be included in maybe next version or maybe next to next version, which we continuously release every 15 days. तो इसी तरह से जो स्पंदन सर ने आज हमारे साथ एक पीडीएफ शेयर किया था,
बेस्ट इंटरव्यू, ये उस पीडीएफ का सेट है, मैं वो पीडीएफ ओपन करती हूँ। तो ये पेज 5 पेजेस का पीडीएफ है। यहाँ पे उन्होंने दिया था वो पीडीएफ का इमेज पार्ट। Anuja, could you zoom the right side? We can go line by line. So this translation that we are producing is through our in-house translation system that is available in at least 11 languages or Indic languages. So for example, if you see free PDF, best interview questions and answers has been translated to मुफ्त PDF, सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार प्रश्न और उत्तर. And there is in the next line, tell me about yourself. So this has been into a single line, so we can post it and press enter to move it to a single other line. So tell me about yourself, which translates to मुझे अपने बारे में बताएं. So if you see the machine output translation, it is not very garbage. It is quite decent enough, and which would like the translator time would be significantly reduced if we have this kind of translation, at least for normal text. And we are also working on the different domains. So for example, medical domain, we are training different machine learning based or artificial intelligence based model, which produce very good translations, decent translations for medical domain, mathematics domain, and science domain, and several others. So for example answer is there in the text. So उदाहरण उत्तर, मैं एक सफल पेशेवर हूँ. I am an accomplished professional with over X years of direct industry experience. मैं एक सफल पेशेवर हूँ और मुझे प्रत्यक्ष उद्योग का अनुभव है. Now in this sentence, if you see, there is with over X years of direct industry experience. So the X years of industry experience. So years is missing here. So we could post edit this thing. मैं एक सफल पेशेवर हूँ और मुझे प्रत्यक्ष उद्योग का इतने वर्षों का X वर्षों का अनुभव है. तो वर्षों का was missing from this translation because the machine has not been able to understand the complete sentence. So let's move to another sentence. उद्योग से मेरा परिचय कॉलेज में मेरे समय के बाद शुरू हुआ. So my introduction to the industry began after my time at college, where I majored in, which is a placeholder, your major. So if you see here, the machine has not been, since it's like a placeholders that are present in the source document in English. That's why the translation has not been very good at this stage. But yes, we are continuously researching over how to improve over these translations as well. So let's go down to what are your biggest strengths. I think there are less placeholders therein, or maybe in what are your biggest weaknesses, which have less placeholders, and machine will be able to understand the sentences properly. So Anuja, could you navigate down? What are your biggest weaknesses, because there are less placeholders there? Let's try to read that and see how the machine translator output produces. नीचे और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हाँ, so let's read an English sentence. Speaking honestly once more, my biggest weakness is my insistence on perfection. उदाहरण के लिए एक बार फिर ईमानदारी से कहूँ तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी पूर्णता पर मेरा जोर है. So if you read the sentence, this makes a sense. This is not this is quite a decent translation, and depending on what the user edits, our system also learns. So for example, कमजोरी पूर्णता पर मेरा सबसे बड़ी कमजोरी पूर्णता पर मेरा जोर है. So if you change जोर है to some other word, we'll so as mentioned earlier, we could do a global replacement from जोर to some other proper word. So this is how the system also learns and provides the dictionaries and suggestions are more intelligent and so on. Yeah. किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए. Anuja, you could show the download as PDF. I think it might have happened by now. मैम ये पूछना चाहूँगी, ये जो ग्रीन हाईलाइटेड है ये किस कारण से, थोड़ा मैं फिर से आज माफ़ कीजिए देरी हो गई, तो ये जो ग्रीन हाईलाइटेड है ये कौन से शब्द दिखा रहा है मुख्यतः?
तो ये जो डिक्शनरी में पर्यायवाची शब्द आए हैं ये वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जी जी हाँ, सर। we are using CSTT dictionaries as अच्छा। glossaries. So तो these मतलब ये जो CSTT बगल में दिखाई दे रही है वो CSTT है। जी जी, इस पेज से जो संबंधित शब्द आए हैं डिक्शनरी हाँ, में, वही शब्द जो है बॉटम लेफ्ट सेक्शन में आपको दिख रहे हैं। तो वो सर ऑटोमेटिकली ले लेगा, स्वचालित है ये? जी जी, स्वचालित जो है ऑटोमेटिकली ले लेगा ये। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक सर। तो जो इंटरनल शब्द है उसका ट्रांसलेशन आंतरिक हुआ है, तो वो इसलिए आंतरिक को हरे हरे बैकग्राउंड में। अच्छा, मतलब हम यदि कोई फाइल इनपुट कर रहे हैं इसमें, तो वो इसमें जो जो शब्द मिलेंगे वो अपने आप वहाँ हमें ग्रीन में हाईलाइट करके दिखा देगा। जी जी अच्छा, ठीक। जो पर्यायवाची होंगे। हाँ जी। Yes. So, Anuja, you were showing download as PDF. Could you? इसी बीच मेरा एक और सवाल था मैम, एक और सवाल था मेरा इसी बीच। मान लीजिए अब ये अंत में हमारी फाइल यहाँ पर फिनिश हो गई और हमने अपनी ओर से इसको फाइनलाइज कर दिया, मतलब ये जब आउटपुट मिल रहा है हमको PDF में मिल रहा है। हाँ, लेकिन बाई चांस जो एंड क्लाइंट होता है या एंड व्यक्ति होता है जैसे हम ये दे रहे हैं, उन्हें इसमें कोई बदलाव करना हो तो फिर से जब हम ये इनपुट कर रहे हैं तो फिर से PDF में ही लेगा ना? नहीं, डालना पड़ेगा हमें? जी, PDF नहीं डालना पड़ेगा। तो जो ये आपका प्रोजेक्ट है ये आपकी डिस्क पे सेव्ड है। तो अनुजा एक बार फाइल मैनेजर आप दिखाइएगा। तो जो फाइल मैनेजर जो आपके एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर। तो ये जो आपका सारा आउटपुट है ये पूरा एक प्रोजेक्ट में सेव हुआ है। तो जब भी आप प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो वो जो भी आपने चीजें बदल की हैं वो आपको बदल होके ही मिलेंगी। जो मतलब जो भी स्टेज पे आपने सेव किया है तो वो सेव होके आपको मिलेगा। तो आपको बार बार PDF इनपुट नहीं करना, PDF केवल आउटपुट के लिए है। आपको एक बार जब PDF इनपुट करना है वो इनिशियल पहली बार, उसके बाद आपको सारा काम जो है इस project.xml जो मेन फाइल है इससे होगा। इसमें सारे आपके आउटपुट स्टोर हैं, जैसे ग्लॉसरीज हो गया, CSTT डिक्शनरीज हो गई, या फिर ग्लोबल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं आप, इमेजेस हो गई, सारी चीजें आपकी यहाँ इस प्रोजेक्ट में स्टोर रही। जो आपको एक और जो फायदा मिलेगा इस टूल के साथ काम करने पे वो है कि आपका कभी भी डेटा लॉस्ट नहीं होगा। तो मान लीजिए कि आपका कभी किसी कारणवश जो है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क फेल हो जाती है या आप किसी कारणवश एक्सेस नहीं कर पाते अपने कंप्यूटर को, तो आपका डेटा हमेशा क्लाउड पे स्टोर रहेगा गिटहब पर। उसको आप कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं लॉगिन करके। अच्छा, और दूसरी बात, मतलब ये जो जितने भी आपने मुझे ये कंपोनेंट्स दिखाए अलग अलग कि इमेजेस और ये सारी चीज़ें, तो ये अलग अलग रूप में अलग अलग फोल्डर में यहाँ पर जमा हैं। हम वहाँ से भी यदि उसको बदलना चाहें तो भी बदल सकते हैं अलग से। सॉरी लतिका जी, आपका प्रश्न एक बार फिर से पूछेंगे? हाँ, मैं पूछ रही थी कि ये जितने भी आपने मुझे फोल्डर्स दिखाए इमेजेस से लेकर ये सारी चीज़ें, इनमें अपने अपने अलग अलग रूप में सेव हैं ये अलग अलग फोल्डर्स में, राइट? जी। और यहाँ से हम लोग एक्सेस करके फिर उसको यहाँ इससे भी मतलब बदल सकते हैं। हाँ, यदि आपको उस फोल्डर स्ट्रक्चर से समझ पड़ता है तो वहाँ से कर सकते हैं ना, नहीं तो सीधे टूल से तो कर ही सकते हैं। डॉक्यूमेंट से टूल्स। अच्छा, एक और सवाल था सर मेरा, मैं पूछ रही थी कि मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका हमारा NDA साइन किया हुआ है और वो हालांकि ट्रांसलेटर के पास ही शेयर हो रहा है, और इसी तरह यदि ट्रांसलेटर ये टूल पर भी कर रहा है तो टूल पर शेयर हुआ। अब यहाँ से हमें इस टूल से क्या गारंटी मिलेगी कि हाँ वो NDA के तहत हम लोग यहाँ पर यदि हम लोग उनको हामी भर रहे हैं कि हाँ हम शेयर नहीं कर रहे हैं कहीं, तो हमारे लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल बनेगा ये टूल भी? क्या कर सकते हैं सर ऐसे स्थिति में, आप बताएं मुझे। लतिका जी, थोड़ी आवाज आपकी काफी ऊपर नीचे हो रही थी, मैं अच्छे से प्रश्न नहीं समझ पाया। आप थोड़ा सा फिर से पूछूं प्रश्न? हाँ, मैं फिर से पूछूं? आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी, बराबर। जी, आप म्यूटेड है लतिका जी। अब ठीक है? हाँ, मैं कह रही थी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट
जो एनडी के तहत आता है, मतलब जो नॉन डिस्क्लोजर वाली बात हो जाती किसी क्लाइंट के साथ, तो जाहिर सी बात है केवल ट्रांसलेटर के साथ शेयर हो रही है। लेकिन साथ ही यदि ट्रांसलेटर इस टूल पे यदि काम कर रहा है तो वो हम क्या गारंटी उन्हें भी दें कि हाँ यहाँ से भी शेयरेबल नहीं है वो चीज़ और यहाँ पे भी सुरक्षित है, और वो फिर हमें हेल्प करेगी एनडीए को पूरी तरह पालन करने में। जी जी। तो जो शुरुआत में आपको प्रोसेस बताया गया गिटहब के द्वारा, तो वो गिटहब जो है प्राइवेट रेपो रहेगा, तो वो प्राइवेट केवल हमारे साथ और जो ट्रांसलेटर है उसके साथ शेयर होगा। तो जो स्पंदन जी ने मान लीजिए हमारे साथ अभी पीडीएफ शेयर किया था, तो वो केवल और केवल स्पंदन जी को और हमारा जो आईआईटी बॉम्बे वाला उड़ान प्रोजेक्ट टीम है उन्हीं को ही विजिबल है। उसमें भी केवल 2-3 जने हैं, उन्हीं को ही विजिबल है, उसके अलावा और किसी को भी कहीं पे विजिबल नहीं है। तो केवल हम 2 ही लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो एनडीए के तहत यदि आगे कोई होती है तो हम उसके लिए कुछ प्रोसेस बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा विषय इतना बड़ा नहीं है। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद सर। आयुष, एक क्वेश्चन है, आप एक प्रश्न है आप कुछ जो ग्लॉसरी के टर्म्स एडिट होते हैं प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में, कैन वी I've answered that. maintain that separately? Basically, can we access that? Pankaj, I guess I didn't get a clear question. I didn't get it clearly due to, I guess, network issue. Could you repeat? So the question is more like a glossary management. Let's say in the process of translation, can you manage, like if a person is kind of, can they create an update and the glossary and can they save it and access it after the project as well? And if they modify something over there, then can they reuse that glossary in some other projects as well? So custom dictionary kind of thing, like C pair in our context that would be. So you're saying that can the user import their own custom defined glossaries in the project itself, right? Something like that, or maybe in the process of working on this project, whatever new words that they are working with, right? Can they access those glossaries as a glossary data? Yes, you can. If you follow a particular editing format, then you can do that, and we will be telling that format in the guide. Yes. तो मैं यहाँ पर आप सभी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको अब इस बात पे क्लैरिटी है कि ये बाकी के कैट टूल से क्यों कैसे डिफरेंट है? एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि क्या डिस्कस हुआ है, बट स्टिल अगर क्या आप सभी को ये क्लैरिटी है कि हाउ इज इट डिफरेंट देन एनी अदर कैट टूल्स और ट्रांसलेट मेमोरी बेस्ड टूल्स? हाउ इज इट एग्जैक्टली डिफरेंट? इज इट क्लियर? Or did we discuss that? सर जी मेरी फिर से समस्या, मैं भी थोड़ा देरी हो गई थी इसलिए आपका बिल्कुल उचित प्रश्न है, मैं भी यही प्रश्न पूछने जा रही थी। श्योर। तो मिल जाए कि क्या खासियत है अन्यों से, तो बस समझ जाएंगे हम। हाँ। Sure. If it has not been discussed, I'll let you guys know now. So basically, in other CAT tools, basically they mostly leverage the
glossaries, dictionaries, and translation memories. They work around these three primarily technological component, right? And the way translation memory work is almost very in a traditional way, where they just first identify different segments of the text, and then they just do a matching or suggestion or replacement, whatever they want to do based on that whole segment itself, right? uh, on the other hand, if you look at it in our tool here, the concept of segment is very dynamic. We are not defining it only at a sentence level or only at a word level or a phrase level. So it is very dynamic, and basically it leverages mostly based on what you are editing. And it also learns. So in traditional translation memory, whatever edits you are making, the system stores all those segments. But here what we are doing is that whatever you are editing, we are just storing it in, not as a normal text string that okay, if this then replace that. No, here basically we are learning from those interactions, and we are creating or formulating a rule on top of that. Now those rules, as of now, the rules that we have developed are somewhat simpler, but the underlying framework is so powerful that in near future we are planning to write lot of intelligent rules, as like more complex rules as well, such as that if the context is this, then these kind of changes has happened. So then the kind of rule that you in your post editing system can learn is so rich, and that can be leveraged here in these kind of systems, in our systems basically. So is it clear, the learning part of rule, and why this paradigm is way better than the traditional normal translation memory setup? Is this argument clear? थोड़ा थोड़ा सर पूरा Okay, नहीं okay. ठीक है, I'll give one example as well. I'll give one example. So let's say uh, uh, कहीं पर हिंदी में एक शब्द का ट्रांसलेशन हुआ है, बुक का, किसी बुक का आपने मान लीजिए किताब मशीन, गूगल मशीन ट्रांसलेशन से, या जो भी आप ट्रांसलेशन इंजन यूज कर रहे हैं एज इनिशियल ट्रांसलेशन, वहां से बुक का ट्रांसलेशन किताब लिख करके आया था, ठीक है। और एडिट करते समय ट्रांसलेटर ने ये देखा कि यहाँ पर बिकॉज ऑफ जेंडर नाउन एग्रीमेंट, पर्सन एग्रीमेंट, वो किताब, और दूसरी बात उसको बेटर लेक्सिकल चॉइस के लिए वो उसको पुस्तक कर रहा है, वहां पर पुस्तकें, ठीक है। लेट्स से वहां प्लूरल है तो वो बुक्स को पुस्तकें कर रहा है या फिर पुस्तकों कर रहा है, ठीक है। तो अब जो ट्रांसलेशन मेमोरी है वो इसको एज इट इज स्टोर कर लेगा कि अगर मान लीजिए ट्रांसलेशन मेमोरी आपकी वर्ड लेवल पे ऑपरेट करती है तो वो लिख लेगा कि बुक्स को आपको लिखना है पुस्तकों। अगर आपकी सेगमेंट या फ्रेज लेवल पे काम करती है तो आपको पूरा का पूरा फ्रेज स्टोर कर लेगा ट्रांसलेशन मेमोरी में, और जब वो सिमिलर फ्रेज आएगा तो सिमिलर फ्रेज आएगा। या फिर अगर आपको ग्लॉसरी में आपका वो डेटा जा रहा है तो आपकी ग्लॉसरी पूरी एज इट इज स्टोर होगी कि बुक्स मीन पुस्तकों, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारे फ्रेमवर्क में, बिकॉज वी डू नॉट हैव सच, सर आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। सॉरी, इज इट क्लियर नाउ? बिल्कुल। Okay. On the contrary, in our system, we learn the interaction. So here, by learning, I mean, system will see that okay, you have changed the किताब को आपने पुस्तकों कर दिया है, ठीक है। Now system will also see कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपने चेंजेस किए हैं, ठीक है। वो उसके बाद सिस्टम विल लर्न ऑन इट्स ओन। और अगर मान लीजिए फ्यूचर में आपका कहीं पर बुक्स की ना आकर के सिर्फ बुक आया है तो वो अपने आप उसको पता होना चाहिए कि मुझे वहां पर ये बुक और बुक्स में जो रिलेशन है, बेसिकली बुक इज नथिंग बट अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ बुक्स, राइट। तो अगर आपने बुक्स को पहले कहीं पुस्तकों लिखा है तो अगर फ्यूचर में कहीं पर बुक है तो वहां पर उसको पुस्तकों का मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन जो होता है अकॉर्डिंगली वहां पर उसका सिंगुलर फॉर्म यूज करना पड़ेगा और पुस्तक आएगा। नाउ एज ऑफ नाउ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ रूल वी डू नॉट हैव इन आवर सिस्टम, बट the underlying engine that we have which powers these kind of rules will allow us to write such kind of rule, which we are writing like every week. We are just trying to create new kind of rules. So soon we will have these kind of very powerful rules which will allow you to leverage your glossary even further, which will take care of the context and make appropriate morphological changes. And not only that, but it will also see in what context you are making those changes. So those suggestions and all will come will
will be given you as a suggestion only in those contexts, and at the same time you can apply some sort of transformation as well, just like I explained that, that if book is there in the future pages, right, then it will automatically try to understand that, okay, maybe here they should suggest pustak rather than pustakom. Does it make some sense? In the same line, I have one more question, Mr. Pankaj. Okay. Sure. So when you are having this green highlighted words which are giving a direction to the respective dictionaries, right? So how the hierarchy is maintained? Like you would be having a number of available words which could be used in that particular combination, right? So how your machine would be putting up that particular word based on the collocation, the number of time the combination has occurred, and this is the most suitable one. How does it take place? Right. So, okay. So let me know if my understanding of your question is correct or not. So basically, you are asking is there are many glossary words, there are many interactions that are happening. How exactly we are making those suggestions, and on what basis? Because we may, is it just that only at if we have just replaced it only at one place, then itself we are making those recommendations, or we have some sort of frequency based estimations and those kind of things that we put in place before we make any conclusion whether we should give it to a suggestion or not, right? Yes, it's majorly my emphasis on is it that how many number of time it occurs, its frequency, or it occurs in between which kind of word combination, the NO4 and So yes. So that's where we need suggestions from the translation community, because we need to see what actually will be the best practices in different domains, because something may be very appropriate for let's say technical content, but may not be very appropriate for literary content, right? So these rules, so what we are focusing right now is to ensure that our framework of writing rule is very powerful. Now, whether you want to do it on a context, like frequency based, context based, those things should be able to customizable. Maybe not at the translation side, but let's say if translator requests us, then we can kind of in a configuration file we can set up those rules in such a way that it works according to you. so But the flexibility is still there. yes, that's where our focus, right? Our current focus is more on that part, like ensuring that our rule writing engine is very powerful, and you can write lot of contextual such kind of even for example, you can look at the prefix and suffix, right? Prefix, like neighborhood words, in what neighborhood words you are making these changes. And again, we can make it even much more richer by saying that not only look at the exact neighborhood word, but try to get the sense of those neighborhood words. Maybe in what category those words, what are the topic of those words, or your neighborhood words. Okay, so basically once we have the powerful framework of writing rules, these basically we just have to write rules. Again, those suggestions has to come from we will see a lot of the interaction when people will use our system. We will see where it lacks, what kind of new things can be done, and we will incorporate those rules. Yeah. All right, thank you. Ayush, would you like to add anything here? But again, what I just to add, whatever I mentioned, I just told you about the richness of our engine. Lot of things are still happening. We have yet to write lot of rules on top of those engines, and Ayush is actually actively working on those rules. How we can make those rules very efficient, and at the same time, we have onboarded many UI UX designer to help us ensure that the user experience at the end of the day, here by user I mean translator, reviewer, and proofreader, is up to the mark. So, but still people have to use this tool a lot so that we get to know what needs to be done here. Yes. Yes. So one more. Yeah, go ahead. Sorry, Latika. Sir, one more question arose to my mind is like, do we have undo, redo, find and replace kind of options just as we have in our Word? Yes.
अच्छा ठीक। Yes, we could undo, redo. Find and replace is restricted to a single page at this point of time. We don't have it across all the pages. Yeah, thanks, Anja. So we don't have that across all the pages at this moment, because then it would be a blind find and replace. Because then the navigation of the word, we have a navigation from one word to another word wherever that word is present. So that is not there in this in this setup yet. But yes, based on the feedback, we are working on this aspect as well. Yes, I guess if any one of you would like to try out the tool, you could send us a PDFs, and we will provide you with a private repository. And since we are not going through any NDA at this point, but it will be privately shared between you and our team, and start importing that into the tool right away. You can evaluate and provide us feedback. Yeah, so you could mail your PDF to ganesh@csc.iitb.ac.in. The email ID I have pasted in the chat, and we will respond you in a couple of hours or 3 hours with the whole project directories. We'll share that with you. We will send you an automatic invite to your email ID.